Look at Darjeeling that time, you know, 1952. So this was the old railway station. See? Crowded. Yeah. Look at the very old. This is what Darjeeling looked like many years ago. You know? Now it's all concrete. Now it's a concrete jungle. It's a concrete jungle. But we have some very interesting. All these kind of buildings you see very similar to some buildings in Shimla. You know. Because I mean obviously you've been to Shimla. Very similar buildings. Darjeeling Himalayan Railway is a UNESCO World Heritage Area. Right. It's a living heritage. It's a living heritage. And the mountain railways, no, one to आपका ऊटी में हो गया एक, और एक कालका शिमला है. So one is also Darjeeling, and Shimla में it's very nice that Kalka Shimla one. But here you see like train is the lifeline of the people of Darjeeling. It's like a friend, you know, always traveling. You see, we've seen it from when we were a child. So it goes inside the town, no? Unlike Shimla ka outside hai. So this goes through the people, and you can see the actual life if you are in a Darjeeling train. If you like, very nice view. It starts from New Jalpaiguri and ends at Darjeeling. Yeah, it used to start from New Jalpaiguri, but now I think they only do it for tourists. You know? They go up to Ghum, I think, and come back. Short ride. Short ride. Yeah. So this is the Mahakal Temple, and this is one of the most sacred places for people of Darjeeling. And also the fact that there's a Buddhist priest and a Hindu priest side by side. You know? So how, I mean, two religions come together. You know? God is one. Yeah, I agree with you. And I believe in that. Yeah. God is one. Yeah. Jai Mahakal. This is the planters club. So it used to be a club for all the planters because there were so many tea gardens around Darjeeling. Sometimes the managers wanted to come and have a good time, you know. So this is, there's also a hospital here at that time. So it's not operational anymore? No, I think they're converting this into a hotel or resort, I don't know. But planters hospital is there, as you can see. You know? Okay. The planters, I think they still come. Hello, sir. Mr. Rahul. Yes. Anubhav. Yes, I recognize. Keventers was originally started by one person called Edward Keventer. He was a Swedish person. Right. And wherever the Raj used to have their setup, Right, exactly. at those places he was asked to open his dairy. Right. So that he could service the Raj. Right. So Keventers was in Darjeeling. Darjeeling was the first Keventers, and apart from that in Calcutta, Delhi, Shimla, I guess. Aligarh, Shimla, Karachi, Lahore, Rangoon, so all over the place. Wherever the Raj had had a big setup. So after independence, Mr. Keventer left India and sold each of these branches to different people. So the one in Calcutta was sold to one Mr. Jalan, and in Delhi it was sold to Mr. Dalmia, and that way. So each property was bought by different people. In Darjeeling it was bought by us. आप लोग शुरू से यहीं के हैं दार्जिलिंग के? हम लोग originally बिहार के हैं,
और बिहार में कहाँ? बेगूसराय, अच्छा। बेगूसराय, दरभंगा, दैट एरिया। एंड आई हैव सीन योर प्रोग्राम मिथिला फूड, हमको वो बहुत पसंद आया था। थैंक यू। My whole family has seen it and we really liked it. So I've seen most of your shows. And originally we are from Bihar. My grandfather came to Darjeeling in the 50s, and in fact he was manager in Keventers from 1950 up to the mid 70s, and then after that we bought the property. Okay. I made a new section, but I have tried to keep the old section. Right, exactly I've been there also. That also. No? Yeah, So many people haven't seen that side. Yes. So what are we going to eat here? क्या खा रहे हैं हम लोग? We are known for pork and chicken products. So you can have. Would you like to have pork or chicken? Chicken would be better. You can have a small platter in which we'll have sausages and meatloaf and salami and eggs. Then let's do that. तो इसमें ये सॉसेजेस हैं? ये सॉसेजेस है, ये सलामी है, ये मीटलोफ है। एक्चुअली ये तो जस्ट आपको सैंपल के लिए, इसमें 250 ग्राम सॉसेज रहता है और 100 ग्राम्स मीट, 100 ग्राम सलामी एंड 2 एग्स। और सब इन हाउस यहीं बनता है? जी, सब इन। Darjeeling is a mixed bag of culture. You know? I mean, like you can go to Shimla. I mean, Darjeeling is 5 times smaller than Shimla, I guess. You know, very small. But because the British were here, and then, like I said, different businessmen, different communities have come here, started their business. You know, scenically, it's also very rewarding. The view of Kanchenjunga from Darjeeling is one of the best views you can ever see. Some beautiful trek routes, you know. So it's got everything for everyone. If you are into adventure, you have a lot of things. If you are into food, you have many things to see, you know. If you are into music, if you are into paintings, and people like Satyajit Ray, all the movies were shot in Darjeeling at that time. You know, Devanand, Amitabh Bachchan, Kamal Hassan, you know, and till date, Barfi ka shooting यहाँ पे हुआ था. So it's been famous ever since, you know, from that time. And now obviously we have a lot of concrete. Now especially if you don't want to live within the town, because it has become quite crowded and it's become a concrete jungle. But the homestay scene is thriving. You can stay in a place like say Sitong or Lepchajagat, you know, some place outside the town, and you can just come visit the town for a day and return to your return to your homestay. And Darjeeling, Kurseong, both these places are known for schooling as well. Like I said, I went to Mussoorie, I told you. For 1 month I stayed there. I met many people from Mussoorie, very old. And they were like, we studied in Darjeeling, man. I was from St. Paul's. It's so nice to meet you. You know, I mean, there's that connection. And they tell us that they were in Mussoorie, but the views in Darjeeling are amazing. We miss that place, you know. Something like that. मुझे लगता है खाने के साथ साथ यहाँ बैठ के व्यू देखना, व्यू देखते सेल्फीज लेते। हाँ, वो भी अट्रैक्ट करता है लोगों को। थोड़ा सा हमें दार्जिलिंग के चाय के बारे में बताइए। दार्जिलिंग टी, यहाँ पे दे आर 87 टी एस्टेट्स इन दार्जिलिंग, और सब लोग दार्जिलिंग ऑर्थोडॉक्स टी प्रोड्यूस करते हैं। जो असम में होता है उसको कहते हैं CTC, वो दानेदार चाय होता है। यहाँ लीफ टी होता है, और इट इज़ मच मोर एक्सपेंसिव देन CTC टी, और फ्लेवर के लिए अच्छा रहता है। विदाउट मिल्क पियेंगे तो अच्छा रहेगा। अभी तो दार्जिलिंग टी का ऑलमोस्ट 50-60% एक्सपोर्ट होता है। जापान में अच्छा खासा मार्केट है, UK में, जर्मनी में। तो जो लोग दार्जिलिंग टी पसंद करते फिर उनको दूसरा कोई चाय पसंद है। क्या स्पेशल बनाता है दार्जिलिंग टी को? दार्जिलिंग टी जो यहाँ का वेदर है, जो ओवरकास्ट कंडीशंस रहते हैं, उस कारण से एक टी को एक अलग सा एक फ्लेवर मिलता है। और उसको पिकिंग करने का एक तरीका रहता है, उसमें 2 लीव्स एंड अ बड पिक करते हैं, तो इस कारण से उसका बहुत एक डेलिकेट फ्लेवर होता है। ये अब क्यों लग गया? हाँ, बहुत है। हम सही टाइम पे आए।
थैंक यू सर। थैंक यू सर। हम लोग लकी थे, सही टाइम पे आए। अब जी, अब तो लाइन लग गया है। बहुत अच्छा रहा ब्रेकफास्ट, बिल्कुल हैवी ब्रेकफास्ट हमने कर लिया और चाय भी बहुत उम्दा थी। थैंक यू सर। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू फॉर हैविंग अस। थैंक यू सर। थैंक यू। नूडल्स हैं, ब्लैक राइस, रेड राइस, ब्लैक कार्डमम, incense. Yeah, maybe I'll tell you something about Rimbik Fresh, you know. Yeah. So Rimbik is a village in Darjeeling. It falls on the Sandakpur trail. But there's a guy called Mingma. He's a very good friend of mine too. So he started this brand called Rimbik Fresh. So they get vegetables, all these food products, you know, from different parts of Darjeeling. So everything that you see here has been done by someone from Darjeeling. You know. So they try to promote local products. All locally sourced. Yeah, locally sourced. Locally sourced. Yeah, but I mean, as kids, you know, we used to come here to play. This was like the most happening place when you were young. So, I mean, that time we didn't have internet, and if we had to meet someone, we'd say backside. Meet me at the backside. We'd meet our friends here only. We didn't have phones, you know. So this was the meeting place for everyone, you know, and also Chaurasta, the main place where we were heading. So you have before internet and after internet. Yeah, the life has changed. Life has changed. But still, if you come to Chaurasta, you'll find most of your friends till now. You know? If you take a walk, if I take a walk here, I'll meet 5 people that I know. You know, so here we are like, if we are doing a round, then we join someone and, you know, let's go for another round. You know, have a coffee tea, sit down, talk about life, and then again dispatch. But everyone knows you here. Yeah, because you know, I mean, I was pretty active with many things, so that way. Normally, like not just me, but everyone knows everyone, you know. ठीक लग रहा है? चलिए। आपका YouTube चैनल होगा शायद, आपको दिखाएगा, है ना? आप लोग नेपाल काठमांडू। हाँ, नेपाल काठमांडू भी गया। मेरे को ये वाला कैब बहुत अच्छा लगता है। हम बहुत सारे वीडियो में लाना भूल गया। चलिए, थैंक यू। पानी पूरी और चाट, पुचका चाट बनाते हैं। आप सब लोग कहाँ से हैं? सब मुजफ्फरपुर से हैं। सब बिहार के ही हैं, तो पूरा पुचका वाला टेस्ट आएगा ना, गुपचुप वाला है। तो कुछ खा लिया जाए क्या? अब किसके पास खाएं? देखिए भैया, असमंजस है हमको, तो ये सब लोग एक ही आइटम बेच रहे हैं। सबसे लास्ट में ना बुलाए थे आप। अब ऐसा भी नहीं कर सकते कि सब पे एक एक खा लें, ये भी दिक्कत है। चुरमुर खा लीजिए, चुरमुर बना दे। चुरमुर जी सर, हमको है ना बना दीजिए। पहला तो है कि हरा मिर्च नहीं खाते हैं हम, उसके बाद प्याज मत डालिएगा, सूखा वाला कोई बना दीजिए आइटम। तो ऐसा कि थोड़ा अलग अलग कहीं लगाएं, सब एक की जगह लगा दिए। जगह नहीं ना देता है, एक के लंग देता है। अच्छा, मतलब जो यहाँ का लोकल म्यूनसिपलिटी वाला बोला है। चलिए, ये भी अच्छा है। आइटम बदल दीजिए, कोई एगो चुरमुर एगो बेचेगा, पुचका एगो बेचेगा, आलू कट एगो बेचेगा। नहीं मानेगा, सबको पूछ के बेचना है। मटर देंगे सर? मटर मत दीजिए, रह दीजिए। चुरमुर है, चुरमुर। ये बहुत प्रसिद्ध डिश है बिहार का, बंगाल का। आप सरसों से डाल दिया ना, घर का याद आ गया। बहुत बढ़िया बना।
अब कितने बजे आए होते हैं आप लोग? सुबह में 8:30। 8:30 बजे लोग खुद से खाना शुरू कर देता है नाश्ते यहाँ में? पे मंदिर है ना सर, ऊपर अच्छा। शिव जी का मंदिर है। महाकाल मंदिर। मॉर्निंग में सब जाता है, फिर उधर से लौटने का समय में खाता है सब। इसीलिए सुबह लगाना पड़ता है। बहुत बढ़िया। आइए आइए आइए, झालमुड़ी पुचका चाट, झालमुड़ी पुचका चाट, आइए 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 आइए। देखिए हम किसी को कन्विंस कर पाते हैं कि नहीं। झालमुड़ी पुचका चाट, आइए आइए। भाव नहीं दिया हमको। आइए आइए आइए, झालमुड़ी पुचका चाट चुरमुर खाइए, आइए आइए। ना बोल दिया। अभी लास्ट ग्रुप है, हम जा रहे हैं। इसके बाद जगह वही रुक गया पहले दुकान पे। So we are now at Chaurasta. So this is the heart of the town. Everyone comes here, sits down, has a cup of tea, you know, and they take a walk around the mall road. It's a very scenic location, as you can see. And you can meet all your friends here in Chaurasta. It's a must-visit site when you're in Darjeeling. And that monument there is, he's a Nepali poet. And why he's very famous is because he translated the Ramayana from Sanskrit to the local language, Nepali language, so that most of the people can read. That's why he's one of the most important poets in Nepali language. This thing that you see over there, there's a bookstore, Oxford bookstore. But in the past, it used to be a photography studio, which was started by a guy called Thomas Parr. If you find a very old photograph of Darjeeling with this building, there'll be written THPARR, you know, Thomas Parr. So it was a studio. But now it's a great bookstore, you know. All of us come here and buy books if we like to read something. Yeah, so I just did a quick sketch, pen and ink sketch of this place. So it was the Thomas Parr's photographer's studio, you know. So that was the way to the studio. Cheers. Oh, it's strong. It tastes like beer. This is by a very young entrepreneur, very young guy called Sangbo. He's also in our entrepreneurs team. So this is his initiative. It's a very nice drink, just recently launched. And this guy is very passionate about what he does, you know. So I think they've put it in local stores around Darjeeling. So do you like the taste? Yes. Yeah. So this is vegan, lactose-free, low-calorie, gluten-free, rich in probiotics, good for gut. It's a fermented drink made up of organic Darjeeling tea, organic cane sugar, water and culture. This is how long you have been running this place? We've been running this place since 2015. Yeah. And me and my brother, I'm the co-owner of this place, and my brother who runs this place actually. Today is like he's not coming today, so that's why I'm here. So we have coffee, some quick snacks. Our main concept was like coffee and books, like sipping a cup of coffee and then reading a book. That's kind of And listening to the music. Yeah, exactly. And enjoying the picturesque view outside. Yeah, definitely. So a lot of interesting stuff is happening in Darjeeling. Lot of young entrepreneurs. A lot of young entrepreneurs, especially after COVID. A lot of people have come back. I mean, people here are pretty great. So they're coming back with fresh ideas. They've lived in the cities for many years. Now they're coming back with very innovative ideas. So we're trying to get in touch with all the entrepreneurs from the hills, not just around Darjeeling, but around Kalimpong, around Singh,
to see what they are doing, to see how we can connect together and make a very interesting team. One thing we found lacking here, like on the town, is like a good small cozy place where young entrepreneurs or any people with creative ideas can come together with good food and good ambience. That's what the place like we are looking for. Everybody can fry food, everybody can I mean do street food, anything, but we want to do healthy stuff, because ultimately I mean what I've learned is over the years is food is going to be the next form of medicine, because I mean everything is inorganic. So if we promote good food and if we do farm to table in the future, we'll be promoting farmers. So there'll be no middleman involved. So that'll be really good for the farmers, and they'll get encouraged, and you know, so we can build up a really nice economy here. So that's our goal. Our goal is ultimately would be to I mean export shiitake is a local produce to mainland India. You know, because I mean you get these stuff, I mean all dried, you know, so they'll lose their flavors over time. But what if we can, I mean, start up a mechanism? If we tie up with Ujjawal and people like him, maybe we can, I mean, feed this to people in Delhi or Bombay, you know. So that's our target. Have this hummus. Okay, sure. The taste of chickpeas and the sesame seeds and some olive oil. Wow. So कुछ नहीं डाला इसमें. There's nothing, just pan grilled. Pan grilled. So that's the beauty of naturally grown vegetables. The taste is different. Please enjoy it. Thank you. The tea is on the way. This mushroom, the texture is very meaty. Right. So when we say like when we talk about the flavors, we have sweet, sour, bitter, salty, and the fifth one is umami. Right. So this is quite rich umami flavors. Right. इसका ये भी ज़्यादा ओवर कुक हो जाएगा ना, तो you want to enjoy the taste. Next time I thought it was all about just taste and all. Now they want to know about the ingredients. कहाँ से source किया है? तो ये shiitake आया है तो कहाँ से आया है? ये multi-grain bread कौन से store से मंगवाया है? कौन से bakery से आया है? तो वो लोग stories जानना चाहते हैं. So it's what I say this bread. This is also nice. So मतलब I should say this conscious eating. Right. Right. Because you are what you eat. That's what they say. So this is really, I mean, this is really good green tea. This is actually a product of one of our friends who's an entrepreneur himself. He's the one who does this pottery and the tea as well. So let me introduce him to you guys. He's Raja, and he'll tell you more about this tea. I'm Raja. Hello sir. Hello. Please join us. Yeah, please join. तो ये पॉट्स भी बनाते हैं आप, टी पॉट्स? नहीं, मैं नहीं बनाता हूँ, ये किसी ने बनाया हुआ है. बहुत सही है. तो ये तो मैं आई बेसिकली लाइक दिस थिंग. हजुर मन पर्यो मलाई. हजुर पट पनि मजाको रहेछ. भेरी नाइस, भेरी इन्ट्रेस्टिङ. आई नेभर सीन अ पट. Yeah. So this is one like your own like pot, you know, over with a cup. This is nice. अपना साथ में चाय बनाया, रखा और चाय पोर किया और अपना पी लिया. बहुत अच्छा लगा. मैं तो इनको कह रहा था कि इन ट्रू सेंस इट्स अ कोलैबोरेटिव स्पेस, कि बेकर भी है, फार्मर भी है, शेफ भी है, चाय का भी, सब लोग साथ में ही है. थैंक यू. Thank you, brother. Thank you. So again, best wishes to you all. Thank you.
स्कूल में बेचते हैं जी। तो ये पेटी लेके अपना जगह जगह घूमते हैं। हाँ। कितना बजे निकलते हैं? यही 11-12 बजे। और कितना बजे तक रहते हैं? 7 बजे तक 8 बजे तक। कोई फिक्स जगह नहीं है? नहीं, फिक्स जगह नहीं, वो फेरी करना। अच्छा, आप किस तरफ के हैं? हाँ, मैं यूपी के। यूपी कहाँ? सुल्तानपुर जिला। सुल्तानपुर के। ये है सवाले है, ये मीट सब्जी वाला है, मीट वाला है। और ये है वो भी मीट वाला है। खुरमा, दाल पूरी, फुलौरी, स्वीट बन, और निमकी, पत्ता वाला निमकी, पत्ता निमकी। और ये भी ये सब्जी का है, सब्जी वाला है जी। कितना साल से हो गया आपको? हम लोग का 3 पुरुष हो गया यही काम करते हुए। काम करते, दादा भी किया, वाह, बाप भी किया, दादा भी किया, हम भी कर 10 रुपये को। अब सुल्तानपुर जाते हैं जी? जाते हैं सुल्तानपुर? हम जाते हैं। अच्छा, तो घर परिवार वही है कि यहाँ है? थोड़े बच्चा लोग यहीं पर, थोड़ा उधर है। ये कह रहे हैं स्कूल में बच्चा लोग खाता है। हाँ, अभी भी खाते हैं। Yeah. Nowadays I don't know kids, they have other options, but we didn't have an option back then. And Yeah. This was the greatest fast food that we went to. ठीक है रोशन जी। आपके यहाँ टाइपो मिल जाएगा? हाँ जी, चिकन टाइपो, बीफ टाइपो, वेज टाइपो। नहीं, बीफ नहीं, चिकन या वेज? हाँ जी है तो एक चिकन टाइपो करवा दीजिए। खाने के लिए भी? हाँ, एक पीस चाहिए। हाँ ठीक है सर, बैठिए। छोटू जोड़ा चिकन टाइपो। इतना बड़ा है, एक आदमी पूरा खा जाता है। इधर तो एक आदमी 3 खाता है। टाइपो? हाँ जी। अच्छा, बैठिए सर। इसमें क्या क्या होता है इसके अंदर में? इसमें वेजिटेबल थोड़ा होता है और मीट है, बस भी है सर। अंडा भी डालते हैं? अंडा नहीं डालते। नहीं डालते। मीट थोड़ा ज़्यादा डालता है अच्छा। अंडा के बदले। कोई लोग फिर अंडा नहीं खाता है। तो बेसिकली एक तरह से बड़ा साइज का मोमो ही हुआ ना? ये बड़ा साइज का मोमो। हाँ जी, हम लोग इधर इसको पहले से नाम बोला था ना, टाइफो। नहीं तो बड़ा मोमो ही बोलता है। अच्छा, और ये इसमें ईस्ट भी डालते हैं? हाँ, ईस्ट से तो वो गूंदना पड़ेगा ना पहले। तो मैदे को पहले इससे गूंदते हैं, गूंद के उसके बाद रख के बाद में ऊपर टिक करके बना, तब थोड़ा बड़ा लगेगा। मिर्च डालते हैं, चिली ऑयल, देखा इसका जूस से निकल रहा है। अच्छा, थैंक यू। बहुत बढ़िया। प्याज खूब डालते हैं ना? प्याज तो डालना ही पड़ेगा। प्याज, मीट और मिक्स करना, कैबेज भी डालना पड़ेगा। पहले तो अंडा डालता है, फिर कोई लोग अंडा नहीं खाता है। अच्छा, अंडा बंद कर दिया। अंडा तो इतना छोटा सा, एक ठोको 4 पीस 6 पीस करके डालता है। अच्छा, लोगों को लगता है कि अंडा भी है। हाँ, अंडा बहुत है। हाँ, अंडा बहुत है, लेकिन नहीं है। ऐसे वो दस्तूर है। हाँ। तो ये पूरा एकदम जो आपका टिंगमो होता है, टिंगमो उसी का तरह ही हुआ ना? सेम। तो सेम तरीके से बनता है और बिल्कुल एकदम ब्रेडी है। सॉफ्ट है। हाँ। बस चलिए, थैंक यू। वेलकम सर।
तो ये हैंडमेड पास्ता है। टिबेटन पास्ता, हैंडमेड टिबेटन पास्ता कौरी। इसका फ्राइड भी होता है और सूपी भी होता है। सूप में भी होता है, जैसा सूपी नूडल्स जैसा होता है। बस ये मैदा है और कुछ नहीं है। मैदा, इसे मैदे में अंडे डाल के बनाते हैं। कितना स्पीड में बना रहे हैं। अब क्या करें, जब छोटा था तब से ऐसा ही बनाता हूँ। अपने रेस्टोरेंट के बारे में कुछ बताइए ना। क्या बताऊँ, कब से है यहाँ पे? मतलब मेरा दादाजी है, वो तिब्बत से आया हुआ है। अच्छा। हाँ, उस टाइम से बना रहा हूँ। कम से कम आपका 120 ईयर्स हो गया। पहले नाम नहीं था बाहर में, सिर्फ मतलब लोकल रेस्टोरेंट है। बाद में हमने नाम रखा है कैल्डन कैफे। कैल्डन किसके नाम पे है? कैल्डन हमारा बेटी का नाम। अच्छा, तो आपके यहाँ पूरा क्लासिक टिबेटन डिशेस मिलता है? सभी मिलता है आपको। लोकल डिश, लोकल सब भी है, मतलब ब्रेकफास्ट भी है, ब्रेकफास्ट भी है, लंच भी है, स्नैक्स भी है, सब कुछ है। सभी बनता है। वेजिटेरियन, चिकन, बीफ, एग सभी बनता है। हम लोग मतलब बर्गर भी बनाते हैं, सैंडविच भी बनाते हैं, सभी बनाते हैं। चाय बढ़िया बना है। ये है कौरी, वेज कौरी, हैंडमेड टिबेटन पास्ता, और उसके बाद टमाटर है, उस पर खीरा है। ये आपका वेज सूप। तो इसको आप लोग हैंडमेड पास्ता बोलते हैं, और जिस तरह से नूडल्स बनाते हैं, चाउमीन उसी तरह से बनाया है इसका, हैं? नहीं, आप खाइए, कैसा टेस्ट है, क्या है। अच्छा। बहुत टेस्टी बना हुआ है। बहुत बढ़िया बना है। नूडल्स से अलग है, थोड़ा फ्लफी है, थिक है, डिफरेंट होता है, डिफरेंट है। और अच्छा होगा ये सूप में डाल के। वैसे तो अभी जो खाया ना, हाँ, सूप में और टेस्ट अच्छा होगा। अच्छा, क्योंकि वो विंटर का डिश है ना। हाँ हाँ, इसीलिए विंटर में मतलब लोकल लोग खाते हैं गर्मी के लिए। ये दल्ले खुर्सानी यहाँ की लोकल मिर्च है, बहुत ही तीखी होती है। इनफैक्ट इस साल जो नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन मिला है, वो दो लोगों को मिला है, डेविड और एडम को, फॉर द डिस्कवरीज ऑफ रिसेप्टर्स ऑफ टच एंड टेम्परेचर। और जो मिर्च होती है उसमें कैप्सिसिन होता है, जो कि आपके दिमाग को ट्रिक करता है, आपको बहुत तीखापन लगता है कि मुंह बिल्कुल आग लगी है मुंह में, ऐसा लगता है। तो ये जो दो लोगों को प्राइज़ मिला है, नोबेल प्राइज़, वो रिसेप्टर्स डिस्कवर करने के लिए मिला है। तो मुझे लगा कि ये जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ की लोकल मिर्च दल्ले खुर्सानी खा रहा हूँ। हाँ, फर्स्ट टाइम इसको खाया था कारगिल में। अच्छा, ये कारगिल में बाज़ार में। अच्छा, वहाँ पे दुकान में ही खाया। हाँ हाँ, उसके बाद फिर खाया था इसको हम लोग सिक्किम में। सिक्किम में भी एक भुटिया फैमिली में गया था। तो फिर रास्ते में मोमो भी खाया था। हाँ हाँ, देखा हमने। आपने देखा है? यूट्यूब पे देखा है। अरे, मोमो खाया था, गाड़ी रोक के। जी जी था वहाँ पर। जी जी जी, तो पहले ही पता चल गया आपको, देखते ही। अच्छा, चलिए आप पहचान लिए हमको, बड़ी बात है। इतने लोग आपको मिलता होगा यहाँ रेस्टोरेंट में रोज आके, आते हैं यहाँ, तो आप भीड़ में पहचान लिया, कम बड़ी बात है। आपको पहचान लिया। दीदी को बोला था हमने, सिक्किम का टूर का, आपको जो मोमो खाया था रास्ते में, और सब ये। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके भी, और कौड़ी खा के। थैंक यू। मतलब आपका रेस्टोरेंट तो दार्जिलिंग का एक लैंडमार्क है। 100 years ओल्ड रेस्टोरेंट है ना। बहुत है अभी तो, रेस्टोरेंट बहुत है, बहुत बन गया है। चलिए, पहले तो सिर्फ ये चौरस्ता में हम लोग का सिर्फ एक तो चाय दुकान था, चाय दुकान बोलते हैं ना ब्रिटिश का। हाँ हाँ, एक ही था ये चौरस्ता में, ये सब बन गया है अभी, बहुत बना। अच्छा वांगदी सर, थैंक यू। फिर कभी दार्जिलिंग आएंगे तो मिलेंगे आपसे। थैंक यू।
मतलब यहाँ पे अपने आप बास्केट लें और जगह जगह जाके जो भी आपको पसंद हो वो आप डाल सकते हैं और फिर जाके फाइनली पे करें और खाएं। ये शॉर्ट ब्रेड है, मेरे को शॉर्ट ब्रेड बहुत पसंद है। तो ये शॉर्ट ब्रेड है, स्वीट स्कोन, कोकोनट मैकरून। उसके बाद फिर यहाँ पे डोनट्स हैं, साथ में पेस्ट्रीज़ हैं, चॉकलेट्स हैं। तो ये इनका पूरा नीचे बेकरी सेक्शन है। Tell us about this place. So this is where live music happens in Darjeeling. This place is a part of GLENARY'S. This is called the Buzz. It's also a bar and a place where people can play music. So people come here to, play music and listen live music. So and the owner is a person named Mr. Ajay Edwards. So he's always done many things for Darjeeling culturally. So he also promotes a lot of local musicians and local art. So this is a place, because there's no other place where you play live music. So this is a platform for local artists to perform. And also for, artists abroad or anywhere in India to come and play their stuff. So you've seen lots of bands here. So live bands, Buzz is a place to be. So they have a bar section, then music, then their bakery and restaurant. Right. So it's the most happening place. Anybody who's visited Darjeeling will visit GLENARY'S. Again a landmark. Yeah, it's a landmark. It's synonymous with Darjeeling. Darjeeling, it's like, you get all culture of music, like there are rock, pop, everything you get it from. Like the frames over there, you can see over there, all the bands are from Darjeeling. Rock, pop, hard rock, metal, all kind of music, all genre you can find in Darjeeling. So what kind of music you play? With my band, what I play is, it's a hard rock band. I do hard rock, but today I'll perform some country rock, pop, slow rock, all that. Great. But the music scene is quite vibrant in Darjeeling. Because there is a chain of musicians in Darjeeling. Because I look up to someone. During my school days, there was like band. I used to look upon them, and there was their elders, and the chain continued from decades. So that's how I came into music, all because of that. These are posters of local bands, right? There's a band called Mantra, which is very, very popular. They are a big Nepali band, and they travel all over the world promoting Nepali music. So all these are local bands. The Red Sky Pirates, Penetrate, again, very good friends of mine. And that's Adam's Apple, Grey Matters, and Gaunde Bhai. This is a band based in Bangalore, but really amazing stuff. Head Motive, Meraki, what's that? The Night Prophets. Night Prophets, and the last one. By the last band ka naam kya ho? Red Orange. Red Orange. Yeah. So these are all local bands from that. Staircase again leads to the bakery. Acha. So this is how it's connected, and you can see a great view from here on a clear day. Cinnamon. Yes. Cinnamon. Cardamom. Cloves. Ginger, cardamom, cloves, black pepper, fresh ginger. Fresh ginger. We have to fresh lime juice. Fresh lime juice, 15 ml. Honey. 50 ml. Yes, 15 ml honey. 15 ml honey. Hot water. 120 ml. Sorry? 120 ml. 120 ml. Yes, fine strainer. इसको स्ट्रेन कर लिया. Honey bee brandy. Honey bee, yes, 60 ml.
Done? Hot toddy is ready. I think it will be good in winter's time when it's super cold and a chilly night. Cheers to Darjeeling. Very nice. Nice and strong.